Further on the Brexit. Welcome to the Kashmir Truth, a show that presents the real picture of the situation as it is in Jammu and Kashmir, a show that calls out the Pakistan-led propaganda, including fake news that is deliberately planted to mislead the world on the situation in J&K. We'll tell you about the situation as it is in different parts of Jammu and Kashmir. But let's get started with some fake news that is being led by elements in Pakistan. So what is that fake news? Manufactured and propagated by Pakistan. On your screen you can see a video that was shared on Facebook TV page showing a gathering of women protesting against the partial abrogation of Article 370, and it's turned out to be fake. What's the truth? The truth is that it dates back to December 2018. In reality, it is a video of women who had gathered outside a bank. This is clearly not a video of any protest against partial abrogation of Article 370 as was claimed by that Facebook TV page. So that propaganda stands busted by us. That is not the only thing. On the 6th of August, let's look at the other screenshot that is there of a video that was shared on different social media platforms, and it was claimed that the Pakistan Army had attacked and destroyed some Indian posts in retaliation to India's decision to partially abrogate Article 370, but that's far from the truth. The truth is that the video dates back to 8th May 2017. It is actually a screenshot of the Indian Army's attack on several Pakistani bunkers along the line of control, and not of the Pakistan Army attacking Indian posts as was claimed by propagandists. The news was widely covered by print and electronic media. So there you have it, the fake news as well as the truth about the fake videos and the fake screenshots of videos that have been propagated by propagandists led by Pakistan. And now we'll look at the situation in Srinagar, the summer capital of Jammu and Kashmir. Motorists you can see riding on the roads. You can see cars plying on the roads as well. It's traffic as usual on the streets of Srinagar. The houseboats, where it is business as usual, with tourists coming in, boats sailing on the Dal Lake as well, with boatmen and tourists on board that you can see. And besides that, there are fountains as well for tourists to see. This is business as usual that is carrying on in Srinagar, with buses, cars, two-wheelers plying on the streets, people out on the streets in good numbers. Well, not just that, you'd remember that educational institutions had opened too, including those like NIT Srinagar, where a lot of students from outside the state are enrolled. So that's the situation in front of you, the way it is in Srinagar, the summer capital of Jammu and Kashmir. The major news of the day is the polling for Block Development Council polls that began at 9 a.m. and ended at 1 p.m. on Thursday. Panchs and Sarpanchs elected in Panchayat polls in Jammu and Kashmir that were held in November-December last year voted to elect chairpersons of Block Development Councils. It was the first democratic process in Jammu and Kashmir since the partial abrogation of Article 370 by the centre. BDCs form the second tier in Panchayati Raj system. Let's take a look at the voter turnout in the BDC polls that happened on Thursday. So elections to the Block Development Council polls took place on Thursday, and counting is also going to take place now of the votes that were cast by Panchs and Sarpanchs. We'll tell you about the voter turnout, the way it happened in Jammu, Kashmir as well as in Ladakh. So let's take a look at the
voter turnout on the screens. In fact, it was an overwhelming voter turnout in the video wall. I may request our producer to put that out. It's an overwhelming voter turnout of 98.3%. That's the total voter turnout in the BDC polls that took place today. And besides that, here's the breakup of the 22 districts polling. Anantnag 90.5%, Bandipora 97.6%, Baramulla 97.1%, Budgam 94.9%, Doda saw 99.2% polling, Gandarbal saw 95.1% polling. Jammu, the polling was 99.5%, in Kargil it was 98.3%, in Kathua it was 99.4%, in Kishtwar it was 99.5%, in Kulgam it was 93.9%, and in Kupwara it was 95.9%. So that's the range of polling from 85% to 100%, and we'll tell you how. In Leh it was 97.3%, in Pooch it was 99.3%, in Pulwama it was 86.2%, in Rajouri it was 99.5%, in Ramban it was 99.2%, and in Riyasi it was 99.7%. So that's about the 22 districts where polling took place. Votes were cast by panchs and sarpanchs. In Samba it was 99.6%. In Shopia it was 85.3%. And Udhampur it was 99.4%. But the big picture is the overall voter turnout of 98.3%. And in Srinagar the voter turnout was as high as 100%, which means that all the elected panchs and sarpanchs voted in the Block Development Council poll in Srinagar, and this is historic. Well, we are now joined by a guest in the studio. We are joined by Javed Rahmani. He's editor with Saiban Urdu Daily in Delhi. I welcome you, Mr. Rahmani, to the Kashmir Truth. Your thoughts on this overwhelming voter turnout? 85% in Shopia, that's the lowest in the range, and the highest being Srinagar, and most of them recording over 90% voter turnout in the first ever Block Development Council polls in Jammu and Kashmir. Yeah, it is a very good news. Not in Kashmir but entire India, all over world have seen BDC election. Today result is over. I think सबसे पहले तो मैं वहाँ की जनता को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत सुकून पुरसुकून और शांतिपूर्वक इलेक्शन न सिर्फ कंप्लीट हुआ बल्कि वोटिंग के मराहिल से भी गुजर गए। और ऑलमोस्ट मैं देख रहा था कि 93% जो पोल हुआ है, ये इट इज़ ए गुड इंडिकेशन इन कश्मीर, ओनली नॉट इन कश्मीर बट इंटायर इंडिया के एक देश के लिए। जब से धारा 370 वहाँ से रिमूव किया गया, हटाया गया था, उसके बाद पहला इलेक्शन था ये बीडीसी का। उस इलेक्शन को देखते हुए जो लोगों में वहाँ उल्लास उत्साह देखा जा रहा था, वो आप देखिए कि 93% वो अपने आप में एक बड़ा एक मकाम बनाना जी। 98.3% हुआ है। ये इट इज अ वेरी बिग एंड आई थिंक मेनी प्लेसेस दे आर द अनअपोज्ड कैंडिडेट इलेक्ट जो है, ये भी अपने आप एक अच्छा संदेश जा रहा है कि शांतिपूर्वक जो है कुछ जगह पे अनअपोज इलेक्ट भी हो गया है। जी, ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी और गवर्नेंस के लिए इसका क्या महत्व होगा, क्योंकि ये पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पोल्स हो रहे हैं और जैसे आपने कहा कि आर्टिकल 370 के जाने के बाद भी ये पहली बार हो रहे हैं, वैसे भी जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार हो रहे हैं। आपने कहा कि शांतिपूर्वक हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर हम ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी की बात करें तो इसका क्या महत्व है? नहीं, ये अपने आप में कश्मीर की डेवलपमेंट पे बड़ा असर डालेगा। देखिए, जो वहाँ से लोकल तौर पे ग्रासरूट पे जो वहाँ के सरपंच और पंचायत और वहाँ के प्रमुख जो चुन करके आए हैं, वो वहाँ की लोकल समस्याओं को न सिर्फ ध्यान रखेंगे बल्कि सरकार के साथ उनका एक तरह से पुल का काम करेगा। क्या क्या डेवलपमेंट वहाँ पे होना चाहिए, क्या क्या बारीकियां वहाँ क्या क्या अब तक नहीं हो पाई हैं, जो लोग चुन करके आए हैं वो उस चीज़ों को न सिर्फ वहाँ बीडीसी के काउंसिल में रखेंगे बल्कि अपनी डिमांड को वो मांगेंगे भी। जी, हमने देखा कि पिछले साल नवंबर दिसंबर में सरपंचों और पंचों के चुनाव हुए। ये वही सरपंच और पंच हैं जो पिछले साल चुने गए, जिन्होंने आज वोट डाला बीडीसी चेयरपर्सन इलेक्शन के लिए। और हमने ये भी देखा जावेद जी कि ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसमें शिरकत की, ना पीडीपी ने शिरकत की, ना कांग्रेस ने शिरकत की तो बीजेपी ने की, पैंथर्स पार्टी ने की, इंडिपेंडेंस ने की। कैसे देखेंगे आप इतने पार्टीज का नहीं शिरकत करना और भाजपा, पैंथर्स पार्टी और इंडिपेंडेंस का आगे बढ़ के शिरकत करना? देखिए, पहली बात तो यह है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं देश की, उनको वो उसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये हमारा भारत का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है इलेक्शन जो है।
इस इलेक्शन में अगर अपने आप को आप अकेले रखना और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं आपको जमहूरियत का से भरोसा उठ गया है। ये अच्छी इंडिकेशन नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ इलेक्शन जो है एक तरह से जमहूरियत का एक अंग होता है। इलेक्शन में पता चल जाता है कि किस पार्टी को जनता कितना चाह रही है। अगर वो पार्टियां हिस्सा लेती तो उनकी अपने औकात नजर आ जाती। ये पहले ही उन्होंने विड्रॉ कर लिया। वो है ना कि आप लड़ाई करने गए नहीं, पहले ही अपना को विड्रॉ कर लिया आपने। तो इसमें उन पार्टियों को जनता आने वाले दिनों में और सबक सिखाएगी। जी, आप ये कह रहे हैं कि शायद इन पार्टियों ने इसलिए शिरकत नहीं की क्योंकि वो जानते थे कि धारा 370 के जाने के बाद पंचों और सरपंचों का उनमें इतना भरोसा नहीं रहेगा, शायद वो इतना नहीं अच्छा कर पाते या शायद अपना खाता भी नहीं खोल पाते, इसलिए उन्होंने शिरकत नहीं की। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर वो हिस्सा लेते तो और अच्छा लगता, बल्कि वहां की जनता में एक अलग उल्लास देखा जाता था। जी, तो अब हम देख रहे हैं कि सारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में इलेक्शन हो चुके हैं, 6 को छोड़ के, क्योंकि वहां कैंडिडेट नहीं खड़े हुए। 283 ब्लॉक्स में हमने देखा कि इलेक्शंस हुए हैं। अगर हम विमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उस लिहाज से इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि 33% रिजर्वेशन रहा है महिलाओं के लिए इन इलेक्शंस में। नहीं, देखिए महिला एम्पावरमेंट की बात हमारे प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, अब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, वहां पे नजर आ रहा है। 33% देखिए वहां पे जिस तरह से महिलाओं में एक तरह से मैं देख रहा था कि न सिर्फ इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया बल्कि बड़ी तादाद में महिलाएं वोटर भी बाहर निकली है घर से। और कई जगह आपने दिखाया श्रीनगर में 100% वोटिंग टर्न हुआ है। ये अपने आप में उस बात का मिसाल है। जी, अब आप ये बताइए कि अभी ये एक टियर का तो इलेक्शन हो गया, ये दूसरा टियर माना जाता है पंचायती राज इलेक्शंस का। पहला टियर पिछले साल हो गया था नवंबर दिसंबर में, जब पंच और सरपंच चुने गए। अब हम देख रहे हैं कि एक तीसरा टियर भी है जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड्स का। अब कुछ अधिकारी ये कह रहे हैं कि इनके लिए भी इलेक्शन होंगे। तो जो पूरी तस्वीर है ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी और गवर्नेंस की, वो आपको क्या बदलती हुई जम्मू एंड कश्मीर में दिख रही है, जो मोदी सरकार के आने के पहले इस तरीके का बदलाव शायद नहीं था? बिल्कुल आपने सही कहा कि मोदी सरकार के आने से पहले बिल्कुल नहीं था, बल्कि मेरी उम्र जो है इतनी हो रही, मैंने अब तक कभी ऐसा नहीं देखा कि कश्मीर में आपको कहीं एक तरह से जमहूरियत नजर आती हो। 370 का हटना अपने आप में जो है बहुत वाज़ेह तौर पे, क्लियर तौर पे इस बात को दर्शाता है कि वहाँ के लोग अब चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, और वाकई जो समाज के मेन मुख्य धारा में नहीं थे अब तक, वो उस धारा में शामिल हों। और यही वजह है कि आप देखिए कि अभी सिर्फ अगस्त में ही तो हटाया गया है धारा 370। अभी गिनती के आपके पास 2 से 3 महीना नहीं हुए अभी जो है, लेकिन लोगों को किस तरह से अपने प्रधानमंत्री के पे भरोसा है, जो उन्होंने निर्णय लिया है, उनके साथ एक तरह से चल करके वहाँ की जनता बताना चाह रही है कि हम आपके बिल्कुल साथ हैं, और आपका जो विजन है न सिर्फ कश्मीर को बल्कि पूरे भारत को आगे लेके जाना, वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि यहाँ की जनता उनके साथ खड़ी नजर आती है। जी, पहले हमने देखा था कि जो केंद्र से पैसा आता था, जो फंड्स आते थे, वो एक सरकारी ऑफिस में आते थे, जो सेक्रेटरीज हैं उनके पास आते थे जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि सरपंचों के बैंक अकाउंट में पैसा आता है। कितना बड़ा बदलाव है ये, और क्या ये बदलाव रहेगा आगे भी, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड्स के भी इलेक्शंस होंगे? नहीं, बिल्कुल। इससे तो एक ये है कि हमारे जो सिस्टम में ट्रांसपेरेंट और आपको नजर आएगा। एक आम पब्लिक भी जो बिल्कुल नीचे स्तर पे बैठा हुआ है, वो भी अपने पैसे का सही हकदार माना जा रहा है, डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। जो लोग बीडीसी में जीत करके आए हैं, उनके लिए भी आसानी है कि वो अपने जहां रहते हैं अपने लिए काम कर सकते हैं, उनको सीधा सीधा उसका फायदा पहुंचेगा। जो बीच बिचौलियों का था मामला कि एक पैसा मुझ तक पहुंचने के लिए कितनी जगह मुझे पैसा खर्च करना पड़ता था, वो अब खत्म हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि करप्शन पे गहरी मार है ये। जी, बिल्कुल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी दुनिया इस इलेक्शन को कैसे देखेगी? बीडीसी के चुनाव पहली बार हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। बिल्कुल, आपने सही कहा कि पूरी दुनिया इस इलेक्शन को देख रही थी और इसका इंतजार कर रही थी। बल्कि एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो तो इस बात का इंतजार कर रहा था कि वो किस तरीके से इसको भी एक इशू बना के हम आगे यूएनओ में बताएं कि देखिए वहां इलेक्शन कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अब उसको भी एक तरह से मुंह की खानी पड़ रही है, और पूरी दुनिया ने, बल्कि आयात में नहीं, दिन के उजालों में देखा है कि वहां पे किस तरह से जमहूरियत जो है न सिर्फ इम्प्लीमेंट हो रहा है, बल्कि लोगों ने दिल खोल करके वोट दिया और अपने कैंडिडेट को कामयाब भी किया है।
एक पहले भी बात हो रही थी कि क्या कैंडिडेट्स उतरेंगे बीडीसी पोल्स में, लेकिन हमने देखा कि 1000 से ज्यादा कैंडिडेट उतरे हैं और काफी जगह, करीबन 27 जगह तो निर्विरोध चुने गए हैं। दे हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। तो क्या कहेंगे कि ये जो एक पूरी कवायद थी कि भाई सवालिया निशान खड़ा कर दें, ये जमहूरियत पे ही सवालिया निशान खड़ा कर दें, बीडीसी इलेक्शंस पे सवालिया निशान खड़ा कर दें, केंद्र के कदमों पे, क्या वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि वो न सिर्फ विफल हुए हैं बल्कि वो एक तरह से औंधे मुंह गिर गए हैं। जो इंतजार दे कर रहे थे और खास करके केंद्र के इस धारा 170 को हटाए जाने की आलोचना कर रहे थे, अब उनको मुंह छुपा के चलना पड़ेगा। जनता के बीच में वो आ नहीं सकते, पूरी दुनिया को वो मुंह दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये अब पूरी दुनिया देख रही है। और आप देखिए ना, कितना बड़ा मैसेज जा रहा है कि जमहूरियत सिस्टम अगर हमारा इंप्लीमेंट हो रहा है, और खास करके वो लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं जो समाज में कभी पीछे उनको रखा जाता था, अब उनके यहाँ से लोग जीत करके आए हैं, उनके यहाँ से लोग पंचायत में एक तरह से मेंबर बन रहे हैं। तो ये सीधा सीधा वो अपने जो कहते हैं सिस्टम पे जमीन पर हैं, जो उनके पड़ोस में रहता है, वो उनको एक तरह से सीधा देख रहे हैं। जी, एनसीपी, कांग्रेस और पीडीपी ने अपने उम्मीदवार तो नहीं उतारे, लेकिन ये देखा गया कि उन्होंने निर्दलियों को, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, उनको प्रॉक्सीज की तरह अपने सपोर्ट किया है। किस तरीके की मानसिकता दिखाता है ये? भाई ये मानसिकता बिल्कुल अपने आप में, ये कोई अच्छे समाज के लिए एक मजबूत मानसिकता तो है ही नहीं। वो बिल्कुल ऑलरेडी तमाम पार्टियों के मुखिया जो हैं वो जेल की चक्की में मजे ले रहे हैं, आटा पीस रहे हैं वहां पे, और वो किस मुंह से खुले तौर पे अपने सामने आते। फिर भी उन्होंने कोशिश की कि माहौल को खराब करें जितना हो सकता था। लेकिन देखिए आप, इंडिपेंडेंट जो हमारे जीत करके आए हैं, वो उनको कितने अच्छे वोट मिले हैं। जब धारा 370 गई तो जो मूल बात कही गई वो ये कही गई कि जो आतंकवाद है उसको अब झटका लगेगा, क्योंकि डेवलपमेंट होगा तो जो वहां के बच्चे हैं, जो वहां के लोग हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस होंगे, वो मेन स्ट्रीम का पार्ट बनेंगे, वो डेवलपमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। क्या आप यही कहेंगे कि ये एक जो पूरा एक बिग आइडिया है, उसी को बीडीसी के जो चुनाव है वो आगे लेके जाएंगे कि जब ग्रास रूट लेवल पे बदलाव होगा, जब गुड गवर्नेंस होगा, जब डेमोक्रेसी को और मजबूती मिलेगी, तो फिर यही जो उनके मंसूबे हैं, जो आतंकियों के मंसूबे हैं, वो और खत्म होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे गृह मंत्री ने बहुत क्लियर कहा है, अमित शाह जी ने, कि युवाओं से उन्होंने आह्वान किया है कि वो तरक्की में, डेवलपमेंट में अपने आप को भागीदारी बनाए, और हमारे वहां आतंकवाद का कोई जगह नहीं है। अगर कोई अब भी इसके बाद जो है कहीं से भी अगर 1% भी अगर वो चाहता है, तो उसको सीधा जो है हमारे यहाँ उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। खास के भारत जो है उन युवाओं का वेलकम करेगा जो यूनिवर्सिटीज में आए। देखिए वहाँ यूनिवर्सिटीज नए नए बनाए जा रहे हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। युवाओं से हमारे प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि वो हम चाहते हैं कश्मीर का एक एक युवा, एक एक वहाँ की लड़कियां जो हैं वो दुनिया में नाम रोशन करें। अगर कश्मीर हमारा इस तरह से तरक्की करेगा तो यकीनन देश भी मजबूत होगा। Thank you, Javed ji, for joining us and for giving us your perspective on the Block Development Council polls that had taken place on Thursday. An impressive voter turnout of 98.3%. Srinagar topping all the 22 districts with 100% voter turnout. Who were voting in these elections? The Panchs and Sarpanchs who were elected in November, December last year. These were for the second tier of the Panchayati Raj institutions in Jammu and Kashmir. The first time these elections have been held in the state. Well, let's move on now. The Jammu and Kashmir administration has started preparations for the first Darbar move, an annual tradition under which officials shift from the state's summer capital, Srinagar, to Jammu for a period of 6 months. Officials of the Jammu and Kashmir administration will be relocating to the winter capital as part of the annual Darbar move exercise, under which offices will remain closed in Srinagar from 25th October till the 4th of November. हस्बे रवायत जैसे हम तैयारी करते हैं उसी तरह से कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ इस टाइम और अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे एम्प्लॉयज़ की अकोमोडेशन को लेके खूब ज़ोरों से तैयारी चल रही है, उनकी अकोमोडेशन अच्छी बनाई जा रही है, मुरम्मत की जा रही है, वाइट वॉश किया जा रहा है, उसको सुधारा जा रहा है। सिविल सेक्रेटरीट में खुद न्यू वॉशरूम्स बनाए जा रहे हैं, कमरे जो हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। हर एम्प्लॉय के लिए सहूलतें पहले से काफ़ी बेहतर होंगी। सीनियर ऑफिसर्स तो हैं ही, तो बाकी हमारे फंक्शनरीज हैं उनके लिए भी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं।
Meanwhile, as the Kashmir Valley is heading towards a long winter season and temperatures fall gradually, the harvesting of crops is nearing an end. Kashmiri apples are now available in markets. As per the central government's order to procure apples, it is buying apples directly from the growers in Kashmir through NAFED. Our correspondent Vishal Baristo took stock of the recent scheme by the sector. I am here at the Kulgam Fruit Mandi. As you can see, the procurement process of the apples is on, and the NAFED officials, they are grading the apples, they are testing the apples on different parameters. It is quite a secured environment, and full security is being provided to the grower so that it can come safely and sell its product. And the process is on. 5 centers have been established throughout the state: Shopian, Srinagar, Sopore, Anantnag, and this one in Kulgam. And as you can see, these boxes, they have been brought by the growers. They have all been sold, and as you can see, they all have their slips, and with the slips you can identify, like this one, this is a B grade apple, and this has been purchased by NAFED, and soon it would be sent to Delhi, and from there on you can have them in your homes. I appreciate the government. मुझे लगता है कि ये अच्छी स्कीम है. इससे हमें किसान और ग्रोवर को यहाँ पे अच्छा फायदा मिलेगा. अगर हम यहाँ पे माल अपना लाएंगे, मुझे लगता है कि हमारा माल जो है वो ज़्यादा बी ग्रेड और ए ग्रेड में है इस कुलगाम में, तो अच्छा रेट मिलेगा सर. नेफेड है और भी लोग हैं, मार्केटिंग एंड प्लानिंग है, एनएचबी है, जेकेएचएमपी है और सारे कमेटी है पूरे इस ग्रेडिंग के लिए. किन पैरामीटर्स पर जांच होती है? जो पैरामीटर जो कमेटी बनाई गई है, जो स्पेसिफिकेशन है गवर्नमेंट द्वारा, 4 पैरामीटर है, उस पे हम लोग स्पेसिफिकेशन बता सकते हैं? जैसे दाग नहीं होना चाहिए, दाग स्कैब नहीं होना चाहिए, और कोई वो जख्म नहीं होना चाहिए, और एक ग्रेडिंग जो है ना एक साइज में होनी चाहिए. जैसे छोटे साइज को ए में हमने इन्होंने जो बताया ए ग्रेड है, ये ए ग्रेड में आता नहीं है. So you heard the growers, you heard the NAFED officials, and you can see that this scheme is quite successful. All these boxes in 2 days, 3,000 boxes have been purchased by NAFED, and it is going on very smoothly, very safely, and quite securely. With cameraman SP Dubey from Kulgam, this is Vishal Baristo, DD News. And now let's take a look at the major news developments reported in newspapers published from the Kashmir Valley. Most newspapers published from the valley have highlighted the news about the first ever BDC polls that happened in the valley on Thursday and new announcements made by the state administration for government employees in Jammu and Kashmir. English daily Greater Kashmir has carried the news about the Jammu and Kashmir government deploying security forces at schools designated as examination centers for board exams. SRTC buses will ferry students and other arrangements have been finalized. The Daily has also highlighted the news that the State Administrative Council has approved a 5% hike in DNS allowance for state government employees and pensioners with effect from 1st of July. The decision will benefit around 4.5 lakh government employees and 1.6 lakh pensioners. The Kashmir Monitor has carried the news about the Jammu and Kashmir DGP Dilbag Singh saying that the terrorist Zakir Musa's successor has been killed and the terror group Ansar Ghazwatul Hind has been wiped out. The Daily has also carried the news about government directing development commissioners and SSPs providing security to panchayat members during their visits to their respective constituencies. Srinagar Observer has carried the news about the government considering to reduce documentation charges of new vehicles in Jammu and Kashmir from 9% to 5%. The English daily Kashmir Images has carried the news that the Delhi High Court has taken cognizance of a supplementary charge sheet filed by the NIA against Jammu and Kashmir Liberal Front Chief Mohammad Yasin Malik. The Daily has also published a report rejecting claims of a clampdown in Jammu and Kashmir. Quoting a group of intellectuals and academicians, the report says things are normal in the state. Rising Kashmir has carried the news about BDC polls that took place on Thursday in Jammu and Kashmir. The paper carried the news about the Maiden Block Development Council polls that saw 1,065 candidates in the fray across 310 polling stations. Urdu Daily Tamil-e-Irshad has carried the news about Jammu and Kashmir DGP Dilbag Singh saying that local terrorists must stop using language of weapons and go on the path of peace.
Urdu daily Kashmir Uzma has carried the news about Department of Registration being established in Jammu and Kashmir and has also reported the increase of 5% dearness allowances for government employees. A photograph has been published in the Urdu Daily showing the smooth movement of public transport on the roads of the valley. Well, horticulture has emerged as a growth-oriented sector for agriculture, which offers a wide range of choices to farmers for crop diversification. In Jammu and Kashmir, farmers are increasingly concentrating on almond production. They are expecting profit and growth in almond production in the future if weather conditions remain favorable in the valley. That's it then in this edition of the Kashmir Truth. Thanks for watching.